उसको Am I audible, student? Yes, sir. Okay. Oh, ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିବେ ଯା we will start the topic. ପଢାପଢି କରୁଛ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ନୋଟ୍ସ ପଠେଇଥିଲି ପଢିଲ? हाँ सर। ବଢିଆ ପଢିଛ ବୋଲେ ତ ବହୁତ ଇଜିଲି ପଢମା ଇଜିଲି ବୁଝମା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କାହିଁ ନା ହବାର? ହଉ we'll start the topic. एसी मोटर जेन मैंने डीसी मोटर पढ़ी ताकि बहुत इजी है एसी मोटर तो स्टार्ट करमा तुम एसी मोटर अच्छे 3 फेज इंडक्शन मोटर अच्छे टॉपिक रे देखो दिस स्क्रीन देखा जाउछे स्क्रीन विजिबल अच्छे कि नहीं स्क्रीन देखा जाउछे ना नहीं
हेलो हाँ सर आसछि ना आज्ञा हो देखो मोस्टली हमें मोटर पढ़ीचु डीसी मोटर पढ़ीचु ना डीसी मोटर the important part kana we see what are the part we see in DC motor like starter and rotor रोटर mostly work kana काम थे कि पूरे DC motor रो और any motor रो what is the work of any motor कारण से काम गुडे मोटर रो काम what is the work of any motor नहीं तो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट good it convert mechanical nickel energy to electrical energy ये करसी मोटर ना ये जनरेटर करसी ये मोटर करसी ना जनरेटर करसी ये जनरेटर करसी दिस इज डन बाय जनरेटर ओके मोटर काना करसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी हाँ माने जदि हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई तागे देमा ते रोटेट करबा ओके सो लुक एट दिस डायग्राम यस हला सर देखो फास्ट जन्म थ्री फेज काना है तुम्हें ऑलरेडी सिंगल फेज पढ़ी देबो और फेज ना सुनी देबो फर्स्ट टाइम बेले देखो थ्री फेज काना है व्हाट इज थ्री फेज लेट मी टेल यू तुम्हें गोटे एसी एसी करंट सप्लाई पढ़ला बेले गोटे वेव फॉर्म पढ़ी देखि दिबो दिस इज द वेव फॉर्म ये केन वेव फॉर्म है व्हिच वेव फॉर्म इट इज केन वेव फॉर्म क्वेश्चन है देखिए साइन वेवफॉर्म साइन वेव फॉर्म वेरी गुड इट इज कॉल्ड साइन वेव और साइनोसोडियल वेव क्वेश्चन है देखिए ये हूँ गोटे सिंगल फेज रो गोटे फेज रो हैला जिते बेले हमर पाखे तीनटा फेज अछि वी गॉट डायग्राम लाइक दिस देखो गोटे ऊपर सिंगल फेज दिस वन इज वन फेज गोटे फेज अछि तार तीनटा फेज ले काना थिबा देखो दैट लुक्स लाइक लेट्स सी दिस इज द फर्स्ट फेज हला ये तापर सेकंड फेज इन स्टार्ट हुआ and we will get the third phase like this हैला this is looks like a three phase okay इधर ये तुम्हार तीनटा फेज होचे that is your अच्छा कलर तो मैं चेंज करने जा RYB थिस मोस्टली you will found RAV तीनटा फेज जेन थिबा एतोर मझिरे केते डिग्री एंगल थिसे के कोइ परबो 120 वेरी गुड 120 डिग्री रो एंगल थिसी 120 के लगासी देखो तीन फेज मिसी के गोटे सर्कल फॉर्म करछन इफ यू लुक एट द थ्री फेज इट फॉर्म ए फुल सर्कल तीनटा फेज मिसी गोटे सर्कल कंप्लीट करबे माने ये 120 ये 120 ये 120 जिते बेले तीनटा 120 थिबा ऑल 120 देन इट इज कॉल्ड ए बैलेंस फेज बैलेंस वर्ड सुनी देबो देख काने काने क्वेश्चन लागे बैलेंस थ्री फेज सिस्टम ओके ओ जम करवा में थ्री फेज मोटर के जम करवा थ्री फेज इंडक्शन वर्ड अगर सुनी जगह में ये कोई पर वो इंडक्शन काने है व्हाट इज इंडक्शन दिस वर्ड व्हाट इज इंडक्शन सुनी जागर की ना सुनी देखो इंडक्शन काने है जी देखो इंडक्शन बोले इंड्यूस्ड है वर्ड इंड्यूस इंडक्शन इंड्यूस रु इंडक्शन हैला गोटे थरे एनर्जी इंड्यूस की जो रोटेट करजे दैट इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर इतरे भी सेम कंस्ट्रक्शन अछि लाइक तुम डीसी मोटर स्टार्टर रहबा रोटर रहबा हैला लुक्स ओवर हियर देखो a three phase induction motor consists of two main parts that is your starter as well as rotor okay but इतरे काना थसी गोटे एसी मशीन और डीसी मशीन भीतर फरक काना देखो फर्स्ट जन्मा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू हैला तापरे जनरल पार्ट के जिमा एसी मशीन काना थिबा मोस्टली देखो डीसी मशीन जेंटा पढ़िदेला डीसी मोटर पढ़िदेला हमें
ओके एतरे काना बा गुटे जिनिस थिबा टॉर्क टॉर्क काना के कोइ परबो टॉर्क काने व्हाट इज टॉर्क ए टावर रिप्रेजेंट करसो हमें व्हाट इट इज कॉल्ड चलो टॉर्क वाला होचे गुटे मैकेनिकल फोर्स टे है जे टेंस टू रोटेट करावा ओके माने रोटेशन के फोर्स गुटे है फोर्स गुटे है काना है इट्स ए फोर्स व्हिच टेंस टू रोटेट रोटेट करावा ओके दैट इज कॉल्ड टॉर्क ओके टॉर्क क्वेश्चन टॉर्क काना भेरी करसो दुई भितरे गुटे एसी मशीन और डीसी मशीन भितरे गुटे एसी मशीन रो इट हैज वेरी हाई इनिशियल टॉर्क वेरी हाई इनिशियल टॉर्क और current draw is very high starting current draw is initial torque means कौन है starting जब start हुआ starting current draw is very high बुझी पाला बहुत हाई current draw करवा starting रे ओके एसी मशीन रे पर्टिकुलरली वे जम करवा दर पार्ट्स मान को ए पार्ट टा मने रखितबो टिके आके पार्ट रे तुमरा आसबा एटा इनिशियल टॉर्क रहबा हाई स्टार्टिंग टॉर्क तार स्टार्टिंग करंट ड्रॉ बहुत करवा से तार मान जनरल केस रे देखबा बोले मोस्टली 7 टाइम्स करसे 7x যদি তোমার গুটে ডিসি মেশিন 15 एंपियर ड्रॉ करूजे ये का करबा 105 एंपियर ड्रॉ करबा बुझी पाला एतकी डिफरेंस बुझे कि नहीं डिफरेंस देयर इज अ बिग डिफरेंस ओवर देयर ओके लुक्स ओवर देयर you will jump over here a three phase induction motor consists of two main parts the starter rotor already ଆମେ इधर ऊपर पढ़ी छु yes or no starter rotor पढ़ा लगबा starter rotor पढ़ा लगबा कि दे response take और fast नहीं सर। ठीक हो थोड़े थोड़े खाली go through कर दमा a stationary part made of laminated silicon steel stamping with slots बोला देखो ये gap माने होचे this gap this is called slots इन द हिगे थिबा जे ये कि तुम्हार एक्चुअली वाइंडिंग हवा वाइंडिंग है ठीक है स्लॉट क्वेश्चन हला एंड इन द वाइंडिंग हवा तुम्हार स्लॉट रे ओके दैट इज कॉल्ड slot carries a balanced three phase distributed winding displayed by a important part है winding displayed by 120 degree 120 degree 120 degree electrical function to produce a rotating magnetic field এটা सेम है जेंटा हम ऑलरेडी आगु पढुतला ओके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करबा रोटर रा काम कोन रोटर बुलबा रोटेटिंग पार्ट इनसाइड द स्टार्टर रो भीतर रहवा से देखो इतरे बहुत जानि पड़तबो स्टार्टर बाहर अच्छे भीतर रोटर रोटर न देखा जातो इतरे अलगा डायग्राम देखमा विथ अ स्मॉल एयर गैप ऑफ दिस एतकी एयर गैप थिबा माने ये स्टार्टर रहल ये तो मतलब स्टार्टर रहला ये तुम रोटर रहबा मझिरे इतरे मझिरे गुडे एयर गैप थिबा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एयर गैप 0.322 mm ओके गुटे 2 mm लेवल रो गुटे एयर गैप थे बहुत कम देसी एयर गैप हला ये कम थिबा तो बढ़िया केले यदि बेसी रहबा वाला वी विल फाइंड सम लीकेज ओके लीकेज हमको मिली जीवा हमको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बना होचे देखो इतरे मोस्ट ऑफ द पार्ट्स होचे देखो इतरे इंपोर्टेंट होचे दिस स्टार्टर वाइंडिंग इज वेरी इंपोर्टेंट और using this one starter winding is very important okay starter core is there squirrel cage जल लिखा है ये पार्ट्स मन को जिमा एग्जाम पे तुमर पड़ला ये डायग्राम ड्रा न करबो आगरु जन डायग्राम तुमने पठाई देबा ड्रा करबो सेटा और ट्राई करबो गूगल सर्च करबा अलगा डायग्राम इटा दिस इज लाइक एडवांस डायग्राम डे ओके ये ड्रा करना पारो एग्जाम रे बहुत बहुत डायग्राम है हैला तो इधर ये तुम्हार शाफ्ट है लुक्स ओवर हियर दिस वन इज शाफ्ट नेक्स्ट टू हैव कूलिंग फैन ये ड्रा करबा नानो ब्रीदिंग फैन ये करबा नानो किछि दरकार किछि नानो इधरे प्रेशर एंड सील बियरिंग एटा बहुत अननेसेसरी देइजे एयर गैप इज देयर एंड इतरे किछि आ ड्रा करबा नानो इतरे ये डायग्राम ड्रा ही ना करबो तार माने ओके तो टाइप्स ऑफ रोटर देखो ये इंपोर्टेंट है ये तुम्हारा एग्जाम रे आसबार क्वेश्चन चांस अछि पूरा टाइप्स ऑफ रोटर काना थिबा we have two types of rotor squirrel cage type squirrel गुटे रखवाले घरवाले गुटे जाली रहती सी that is called cage squirrel cage type of थिबा
and we have another one is slip ring type, wound rotor or slip ring type. Diagram देखले बहुत से बुझी पारबो हैला, looks over here, diagram देखि पारो बहुत से बुझी पारबो, easily बुझी पारबो how a squirrel cage looks like and how a wound rotor looks like. देखो, looks over here, looks at the diagram, you will find this. What is the difference between these two diagrams? Difference important is slip ring. Looks over the slip, देखो slip, slip आके पढ़ना, slip तो बहुत important है. Slip, slip is very important. Slip, three slip ring winding. ହେଲା, बाकी सब सेम रही थे देखो. General supply is same in wound rotor or in slip ring type rotor. You'll found देखो इधर construction देखो बोले this type थी वो, इधर construction देखो बोले there is a type रो थी वाला type. Lining ये थी वो मझिरे wound ही थी वो. Okay, squirrel case type. দুই ভিতরে ফরক আছে, দুই অলগা অলগা জায়গার ইউজ আছে. ইফ ইউ লুক এট দ্য ইউজ দেখো, the squirrel case is made up of core with copper and aluminum bars and this ring. देखो इधर this one is important part होची इधर, it is maintenance free and low cost. And इधर डिजाइन देखो बोले लो कॉस्ट ना जान बार तुमको जो ना पड़तो देखो, look at the design is very simple in design. बस laminated core माने प्लेस होची, laminated core बोले देखो गुटे सीट थिवा, तार पाखे आउडे सीट थिवा, तार पाखे आउडे सीट थिवा ने रखाई दियो तार ऊपर टच ना करन बट तार ऊपर रखाई दियो, that is called laminated core. Okay, lamination ହେଇକି ଥିବା, you know the word lamination, you know laminated core ଆସିଛି. Okay, ତାପରେ କାଣା ଦେଇଛି ଦେଖ, rotor resistance fixed similar ଦେଇଛି. ଭିତରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଦେଖ, rotor resistance is fixed and low, starting torque high starting torque, it has very high starting torque, look over there, it has high starting torque. हमको high starting torque कहाँ ले दरकार ଗୋଟେ motor रे, why we need a high starting torque, कहि पारबो कि ये कहि पारबो कि रे, why we need high starting torque. अरे कुह, why we need a high starting torque. सर सेटा हाई थिले सना सर हम करंट पास करि परिबा, लो थिले सर सेटा तो ना, that is not the one. High ଆଉ କିଛି କାର opinion ଅଛି କୁହ ଏତାର ଉପରେ. हाई करंट दरकार हमको. You need high current. देखो high starting torque कहाँ दरकार देखो, if you are going for crane, crane रे तुमे इतले लोड उठाबो, starting रे लोड heavy थिबा ना नहीं, थिबा ना हां नहीं. सर So that's हां why we need high starting torque. माने बहुत जोर रे पहला रू घिची देबा बोले ए ऑटोमेटिक जितले ऑब्जेक्ट ता ऊपर के पले आसबा, तापरे तो फोर्स नॉर्मल कर देले भी चलवा. सिमिलर फॉर पंपिंग, नॉर्मल पंपिंग नहीं, इंडस्ट्रियल पंपिंग देखबा बोले हाई स्ट्रेंथ रे तुमे पिक करबा बोले तापरे से धीरे धीरे करकी माने लोड के तुमे कैरी आउट कर दबो हैला. जेंता कि तुमे गोटे बॉक्स के घिचो, हाथे गोटे रसी रे बॉक्स गोटे घिचुतबा बोले लोड बॉक्स टे अछि और पत्थर को आनु बोले स्टार्टिंग रे जोर से ताकत लगासो कि नहीं, that is called high starting torque हैला. and general case रू सेटा के थेसी देखो 5 ରୁ 7 टाइम्स थेसी, it is 5 to 7 times of that हैला. got that. Mostly used for 90% industrial application. एक example दइए तार, three phase insulated winding are similar to starter star connected and brought to a three slip ring. इतने तीनटा slip ring थी भाई, you will get slip ring like this, slip ring winding दइए. इधर आउटे cross sectional diagram थिला, you will get a better view. Okay, it is very costly. Important इधर कहना देखो, it is very costly. Maintenance used for high torque load like cranes and mills. Cranes and mills रे use person. It is very costly. Okay, this one is very costly. This is costly. ये mostly तुम्हारे pumping लगी हुई है, pumping. You'll find this on pumping, drainage system, pickup, air pressure लगी use person. ये mostly use हुआ तुम्हारे lifting case रे, lifting, lift रे use हुआ, crane रे use हुआ. Okay,
for that. Oh. Next important one, very important one from this topic, RMF. RMF ଆଗରୁ ପଢିଛ? Yes or no? Rotating magnetic field. No. अच्छा, RMF ने पढ़ी. ଆମେ already ପଢିଥିଲା magnetic field. Rotating magnetic field ନା ପଢି magnetic field ପଢିଥିଲା. ଯେମିତି ଲାଗି ଦେଖ ଆଗରୁ ତମକୁ ବତେଇଥିଲି ଯୋଉଟେ magnet ଥିବା north south ହେଲା ଇତିରେ ତୁମର ମଝିରେ କାଣା ଥିବା ଗୋଟେ conductor ଥିବା rotor is there. So ଆମେ line draw କରିକି ପଢିଥିଲା ଗୋଟେ line ରେ magnetic field ଯାଉଛି starting ରେ ଇଆଡେ ଆଉ ଗୋଟେ line ରେ magnetic field ଯିବା second line ଲାଗି ବେଲେ କାଣା ହବା ଇଏ ଗୋଟେ direction ରେ ଗଲା ଇଏ ଗୋଟେ direction ରେ ଗଲା. What will happen? It will tends to create a torque. टॉर्क गोटे क्रिएट करबे कि नहीं ये सिस्टम पढ़ी दिला ना हमें ये जहाँ ड्रॉ कर तुमको दिस वन ये आगे पढ़ी दिला हमें ओके ये टॉर्क क्रिएट करबे दैट टॉर्क विल लीड्स टू रोटेशन दैट टॉर्क विल लीड्स टू रोटेशन टॉर्क टा रोटेट करावा मशीन के ओके ये जनरली हमर डीसी मोटर केस रे पढ़ी दिला ओके लाइक तुमर ये पढ़ी देबो हमर पीएमसी केस रे पढ़ी दिला माने गुडे जोडे मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्शन रे टॉर्क जनरेट हेसी टॉर्क प्रोड्यूस होबा ओके तो इतरे काण हवा देखो लुक्स ओवर हियर इतरे हमर तीनटा फेज अछि हमर पाखे दुटे ना तीनटा फेज अछि सो वी विल गेट जनरली थ्री टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3 तीनटा टॉर्क पे हम ई केस दिस केस विल गेट थ्री टॉर्क दिखाई देखो वन बैलेंस थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टार्टर वाइंडिंग इट डिस्प्लेड 120 डिग्री ये तीनटा जिनिस भितरे का थिबा एंगल 120 120 120 ओके and generally काना थिबा हमें ऑलरेडी तार रोटेशन ऊपर पढ़ी दिला ना स्पीड n ର फॉर्मूला काना व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ n व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ n स्पीड ର फॉर्मूला काना ऑलरेडी पढ़ी छु रे डीसी मोटर रे n इक्वल्स टू ए जगह लिखा ही देखो n इक्वल्स टू व्हाट 120 f by t okay what is f f काना है what is f पिलावन f काना what is f फ्रीक्वेंसी देखो इधर आउट वर्ड अछि क्या तुम क्वेश्चन ने करबा नोट्स टा देखबार गिले दिस वेक्टर सम इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फील्ड क्रिएटिंग अ सिंक्रोनस स्पीड बेले काना आउट वर्ड अछि इधर पल्सेटिंग एमएमएफ पल्सेटिंग बेले काना तो मूवी मान के देखि देबो गोटे जिनिस देखि देबो मूवी मान के गोटे जन आईसीयू रे भरि देबे जिधर कि जने लास्ट स्टेज रे थिबा गोटे टीवी टे लागि दिसी एंड देयर वी सी सम सिग्नल्स ओवर हियर किसी की नहीं इधर से मरी जीवा ये काना हबा सीधा लाइन ही है ऐसे की नहीं यस और नो ये जन ये लाइन लाइन के थिबा जन दिस लाइन लाइन ही जाउ जो इधर जन हार्ट बीट ता दैट इज कॉल्ड पल्स दैट इज कॉल्ड दिस गुडुडे सेगमेंट की काना कहसन पल्स दैट इज कॉल्ड पल्स हला पल्स बोला हो छोटे लाइन छोटे लाइन छोटे लाइन छोटे लाइन एंदा हवा तो ईएन थीसी क्या कहिए देखो ईएन मैग्नेटिक फील्ड अछि ये पल्सेटिंग क्रिएट करवा तार माने ये T1 गुटे पल्स क्रिएट करवा T2 गुटे पल्स क्रिएट करवा T3 गुटे पल्स क्रिएट करवा गुटे तीनटा पल्स क्रिएट करबे ओके एंड तीनी पल्स मिसी करी वेक्टर सम बेले स्केलर वेक्टर बढी देबो ओके से सम रे दैट विल क्रिएट अ रोटेशन तापरे आसला सिंक्रोनस स्पीड काना सिंक्रोनस स्पीड काना सिंक्रोनस मतलब तुम बुझी पारबो कांस्टेंट स्पीड
इतरे स्पीड वेरी करे ही नहीं, स्पीड बदले ही नहीं तार माने हला लाइक तुमर पंप मोटर स्पीड बदल सी कि पंप मोटर तुमर जेन वाटर पंप मोटर थी चेंज स्पीड नहीं ना नहीं भाई तो जनरली तो स्टार्टिंग रे यू विल फाउंड सम लिटिल बिट ऑफ टॉर्क एंड ऑल तापरे काना हवा से सिंक्रोनस स्पीड के पले जीवा ओके दैट इज कॉल्ड अ सिंक्रोनस स्पीड ओके तापरे जनरली क्या आसमा ये ns equal to 120 f by p जन से ई फार्मूला रिलेटेड वी हैव डन सम क्वेश्चन आल्सो हला जिंतरे कि तुमर एग्जाम रे काना हवा फ्रीक्वेंसी देतिबा स्पीड देतिबा एफ देतिबा और पी देतिबा तीनटा भितरु एनसी दुईटा देतिबा हला सपोज करो लेट्स से n equals to 1500 f equals to 60 hertz what is the value of p ର value काना हवा p equals to काना हवा n equals to 120 f by p so p equals to 120 f by n so that is equals to in a question asba exam रे हला maybe 5 marks maybe 2 marks 120 f by और f ର value काना अछि what is the value of f f ର value काना अछि पिला माने 120 f ର value जगह रे 60 अछि 60 120 into 60 y 1500 ये तार वैल्यू आवा जहां भी हमें वैल्यू भाग करा वाला दिस इज द वैल्यू ऑफ p और पोल्स यू जनरली गेट ओके इधर ଗୋଟେ क्वेश्चन देखिए देखो एग्जांपल टे भी दीजिए देयर इज इट शोज एन एग्जांपल यदि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी 50 जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी 50 ଅଛି 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ଅଛି पोल ର वैल्यू चारटा पोल्स ଅଛି देन स्पीड काढा हवा ns equals to 120 f by p फार्मूला पुट करजे and it will give an output of 1500 rpm एटा भी क्वेश्चन तो एग्जाम रे पाएबो ओके दिस माइट बी योर 2 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क रो क्वेश्चन आसबा एटा एग्जाम रे पाएबो ओके जंप टू द नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट रोटेशन देखो यार से रोटेशन एक्सप्लेन करिजे फेज रोटेशन t1 t2 t3 करके देखो t1 t3 t2 ओके दैट लीड्स टू ए रोटेशन इधर रोटेशन एक्सप्लेन करिजे देखो बोल से look at this diagram t1 is producing a torque like this t1 is producing a देखो এটা एक्चुअली 3 फेज रे थी ना तो 2d डायग्राम रे देखिने बोल से तुम देखि ना पारो ओके cause it has a phase angle of 120 degree फेज एंगल थिबा इट्स 120 डिग्री ओके इतरे काना हवा ये द रोटेशन यू कांट सी ऑन दिस काइंड ऑफ डायग्राम बट इतरे काना हवा तुम बुझी पारबो कि तीनटा फोर्स में चिगरी T1 T2 T3 मिसिगी द तीनटा फोर्स मिसिगी और दिन टॉर्क मिसिगी दिस थ्री टॉर्क विल क्रिएट अ रोटेशन हला दिस थ्री टॉर्क विल क्रिएट अ रोटेशन जेंटा कि हम सिंगल फेज रे गुटे टॉर्क करतुला से काम जगह तीनटा टॉर्क करबे खाली डिफरेंस एतकी है कि तीनटा टॉर्क सेम हितबे एंड तीन भीतर एंगल किते थिबा 120 डिग्री थिबा एतकी खाली डिफरेंस है द ओनली डिफरेंस इज इट शुड बी थ्री डिफरेंट टॉर्क सॉरी थ्री सेम टॉर्क विथ 120 डिग्री एंगल डिफरेंस दैट्स इट तो 120 f by p जन इतने इंपॉर्टेंट वन हो n equals to 120 f by p this one is very important formula ये एग्जाम रे तुम्हारे तरफ क्वेश्चन तुम्हें पाएबो ओके तुम्हें जनरल स्टेप यदि देखो बोला प्रिंसिपल ऑपरेशन नेक्स्ट अछि देखि देखि देख रे अस रोटर देखो अ स्टार्टर आर आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉस द रोटर एट ns होची सिंक्रोनस स्पीड ईएमएफ इंड्यूस इन द रोटर बाय फैराडेस लॉ e2 देखो इधर ईएमएफ e2 लिखि छी e2 होची ईएमएफ ईएमएफ का ना ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नेक्स्ट s इज स्लिप तुम्हें स्लिप ना पड़ी देबो नहीं स्लिप पढ़वा आज what is sleep okay sleep is very important we will go through sleep देखो sleep rotor is sorted the current flow in this produce magnetic field देखो the step by step दे जितरे first step by step जिमा first step is
A starter will cut the rotor connector at ns synchronous speed रे starter rotor connector cuts करवा magnetic field cut करवा next काण करवा EMF induced in the rotor by Faraday's law EMF generate हवा next काण हवा rotor current will produce its own magnetic field rotor ର current ଯେନ୍ ଥିବା ସେ ନିଜର ଗୋଟେ magnetic field create करवा next काण करवा that magnetic field also creates a torque तापर दुई torque भितर difference असले rotation perform होगा ये सुननो এটা আমি অলরেডি পড়িছি এটার উপরে rotor last ये important word दिए देखो rotor never reaches ns otherwise no relative motion or no mm so no torque hence well କାଣ देखिए देखो इधर स्लीप रो ଗୋଟେ next formula देखिए तले देखो भल से बुझी पारबो तुम ए formula रो देखि की हला तुम rotor रो speed केते बेले भी ns संगे मैच ना करे n is never equals to ns काना बा दुटा सेम ही बोला टॉर्क प्रोड्यूस ना होए सेम फेज रे पले जिबे दुटा बुझी पारलो ये टॉर्क काना टॉर्क केनता प्रोड्यूस आसी ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଲେଟ୍ସ मी एक्सप्लेन द टॉर्क अगेन ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି दिस इज लाइक एन ऑब्जेक्ट ହେଲା इतरे में ଗୋଟେ फोर्स पुल करछे लाइक दिस ଗୋଟେ फोर्स दउछे मैं ଗୋଟେ फोर्स दउछे आडे देखो एंड जदि मी फोर्स के आड के दउछे बेले आर ई जदि ई जगह रे फिक्स अछि जरे काना अछि फिक्स्ड अछि and I am giving a force like this, then this fellow no, ये जगह fix नहीं करूँ let me fix on the middle one मझिरे fix कर दवा जगह fix हो जाए सी and मैं जगह गोटे force दूचे आउटे force आड़ के दूचे पहले तो से rotate करवाना ना yes or no torque should be there should be a difference in torque T1 and T2 भितरे difference थिले जैसे rotate करवा yes or no same page रे थिले rotate नहीं करे से বুঝি পারলা যদি ये ऑब्जेक्ट যদি आड़ के पुल पुश कर जे যদি মই ইয়াড়ে আউটে ফোর্স দেমি লাইক দিস গোটে গোটে কলর দেই দઉં যে रेड कलर गोटे फोर्स होचे सपोज करो T1 गोटे अछि ये T1 है और T2 में यार के देली ये रोटेट करवा रोटेट नहीं करे ओके दिस टू कांट रोटेट ओके और टेंड्स टू कैंसिल इट आउट इधर वी जणो कैंसिल आउट ही जिवे इट कांट क्रिएट द मोशन वी नीडेड नेक्स्ट इंपोर्टेंट वन होची स्लीप देखो स्लीप तुम 2 मार्क क्वेश्चन आसबा एग्जाम रे देखो तो स्लीप ऊपर स्लीप इक्वल्स टू s इक्वल्स टू ns minus nr by ns nr होची दिस टू पार्ट्स इच ns देखो बहुत से टिके एक्सप्लेन कर दमा इंपोर्टेंट काना है जे स्लीप काना है स्लीप इज द डिफरेंस ऑफ स्लीप इज द डिफरेंस ऑफ सिंक्रोनस स्पीड टू नॉर्मल स्पीड जनरल वाइज देखबा बोले स्लीप काना है सिंक्रोनस स्पीड रु नॉर्मल स्पीड रो डिफरेंस एंड स्लीप काना है सी सबले बिलो 1 रहवा मोस्टली 1 to 5% रहवा हैला तो 0.01 रु 0.05 तक रहवा ये स्लीप रो वैल्यू स्टार्टिंग रे काना थबा इतर गोटे ग्राफ भी थबा पछरे पढमा हमें स्लीप एंड स्पीड ऊपर वेरी इंपोर्टेंट स्लीप आके ओके स्टार्टिंग रे काना हवा स्लीप रो वैल्यू 1 थबा स्टार्टिंग रे जितले मोटर स्टार्ट नहीं थे बिफोर स्टार्ट स्लीप वैल्यू काना थिबा 1 थिबा हला जेतले मोटर स्टार्ट हे जिबा इट विल गोस लाइक दिस एंड इट बिकेम 0.1 to 0.5 हला तो काना हबा जेते बेले स्लीप रो वैल्यू 1 थिबा एतले काना हबा स्पीड 0 थिबा स्पीड काना थिबा 0 थिबा एंड स्पीड जेते बेले स्पीड गॉट सम स्पीड मोटर जेते बुली बसबा स्पीड तार बढ़ी जिबा n स्पीड रे थिबा then this fellow got let's see ns is the sync speed and n is the normal speed then slips became ns minus n that is your slip synchronous speed वाला होचे गोटे प्रीफिक्स वैल्यू हैला जेंदा तुमर एग्जाम गोटे पंखा किनी जिवो पंखा रे लगा छै ना the speed is 1500 rpm that is the synchronous speed it will sync at that speed okay and synchronous speed and normal speed with that there is a difference that difference due to mechanical device रे you will found those difference हला mechanical device टे बोली कि तार भितरे difference थिबा that's why we get a variation of 0.1 to 0.5 over here okay
sorry, that is 0.1 and 0.5 है 0.1.5 बहुत जो आएगा 0.1 0.5 कर दो 0.1 0.01 0.05 okay looks over here ଏବେ ଦେଖ next term ମାନେ ତମେ easily ବୁଝି ପାରବ ଯେ ଯାହା ବି ଅଛି important parts ଯଦି ହଉଛି slip like କାଣା ଅଛି ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହି ଦઉં slip ଲାଗି if you go for the slips you have slip like काଣା थिबा देखो first थिबा गुटे ns that is your synchronous speed next गुटे काଣା थिबा a rotor speed next we got slip is s equals to ns minus nr this is the formula for slips and this is very important for you okay this is very important for you and for any actual motor can see the actual motor lagi for any actual motor real motor gute lagi always speed less than the rated value or synchronous value এটা ଗୋଟେ important word ହେଲା n ର value ସବୁବେଳେ ns ରୁ କମ ଥିବା that's why we got some slip over there okay ବୁଝି ପାରିଲ ଏବେ jump to the important one the torque equation the derivation तुम कोर्स रे नानो अच्छा रोटर फ्रीक्वेंसी छाड़ देलांगे रे रोटर फ्रीक्वेंसी काना देखि दियो रोटर के स्पीड रे किनरेबा फ्रीक्वेंसी काना है स्लिप इनटू f is rotor frequency देखो जनरल फ्रीक्वेंसी जेंटा थिबा तार संगे स्लिप मल्टीप्लाई कर दो बोले यू विल गेट रोटर फ्रीक्वेंसी देखो ये हो जनरल फ्रीक्वेंसी जे तमर सप्लाई थिबा सप्लाई फ्रीक्वेंसी and multiply with slip so you will get the rotor frequency rotor के frequency अछि तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रो कम रहबा ना बेसी रहबा देखो लिखा है at standstill slip is 1 so frequency f so at no load it became 0.5 to 2% at full load it became 0.02 to 0.05% low load रे 0.5 ରୁ 2% एक वेरी करसी and full load रे का वेरी करसी 0.02 ରୁ 0.05 जिन मैं आगरो कहितली this one okay next jump to the torque equation looks over here this is the final torque equation जेन पॉइंट बुझिना पारबो कहबो रे पिला माने ऑलरेडी हमें टॉर्क इक्वेशन पढ़ी छु बट ये टाइप रो इक्वेशन ना पढ़ी थ्री फेज ले इक्वेशन है तो इधर देखो सिंपलीफाइड वर्ड कहि दो देखो इफ इट इज द R2 जेन लिखा है दैट इज योर रोटर रेजिस्टेंस रोटर गुटे कॉपर कॉइल टे है तो कॉइल लगे गुटे रेजिस्टेंस थिबा दैट इज द R2 रोटर रेजिस्टेंस X2 x असला वाला you will found that is reactance at no load reactance at or starting is very good word starting reactance थिबा that is your X2 E2 कण है E2 हो जे EMF केते थिबा से रोटर ये EMF थिबा हैला ते देखि गुड इक्वेशन बनाई छी इट्स द T equals to the torque equation T equals to K into K हो जोटे constant K into S of the slip that is your E2 square into R2 divides by R2 square plus S slips into this one is slip into X2 the whole square got this this is the formula of torque equation तुम्हारा exam रे जदी पढ़वा construction and working you will get this equation over there और इक्वेशन तो बस रखि दो जदी क्वेश्चन पढ़वा पहले एग्जाम रे ओके ये क्वेश्चन आसबा तार ऊपर वाला जदी देखिए देखो मैक्सिमम टॉर्क कंट्रोल कैन बी अच्छा ये मैक्सिमम टॉर्क दीजिए स्लिप का मैक्सिमम टॉर्क एट स्लिप मैक्स है मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू दीजिए लुक्स ओवर हियर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए देखो 7 रे फैक्टर अफेक्टिंग टॉर्क
फैक्टर अफेक्टिंग टॉर्क केन फैक्टर टॉर्क के अफेक्ट करसन देखो फर्स्ट सप्लाई वोल्टेज एटा ऑलरेडी हमें अलगा मोटर लागि डिस्कस करिजु आउ थरे डिस्कस कर दमा ओके सप्लाई वोल्टेज देखो वोल्टेज तुम कम करबो बेसी करबो बोले टॉर्क वेरी करबा केनता वेरी करबा देखो इट डिपेंड्स स्क्वायर T is proportional to V square है ना वोल्टेज रो स्क्वायर ऊपर डिपेंड करबा जेंडा की जगह ऑलरेडी देई छी तो एग्जांपल देकी साइड कर देखो बोल से looks over here a 10% of drop leads to 10% of voltage drop leads to 19% of torque drop यदि तुम्हार वोल्टेज 10% ड्रॉप करबा बोले 19% टॉर्क ड्रॉप करबा लुक्स ओवर हियर देखो नेक्स्ट देखिए देखो रोटर रेजिस्टेंस R2 इंक्रीजेस देन स्टार्टिंग टॉर्क अप टू मैक्स देखो रोटर रेजिस्टेंस यदि बढ़बा R बढ़बा बोले और R2 बढ़बा बोले if the R2 increases then the starting torque increases starting torque will be a torque लखमा बोलवा a torque will increases max से जीवा पूरा तरह रेजिस्टेंस मैक्स से जीवा टॉर्क मैक्स से जीवा व्हाई देखो बेसी रेजिस्टेंस लेवल आर इफ द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस ओम्स लॉ में पढ़ी छु v इक्वल्स टू काना आई आर माने आर बढ़वा वाले इट विल ड्रॉ मोर करंट बेसी करंट ड्रॉ करबा दैट्स व्हाई यू विल गेट द मोर टॉर्क हैला सप्लाई फ्रीक्वेंसी ये तो हमर इक्वेशन रे देखि छु ns इक्वल्स टू 120 f/p से जगह रे लिखाई छि एफेक्ट सिंक्रोनस स्पीड एंड रिएक्टेंस हैला नंबर ऑफ पोल्स भी सिमिलरली वैल्यू करबा नंबर ऑफ पोल जते बढ़तेल जिबा तो स्पीड ऑफ द मोटर एते बढ़िया हेतेल जिबा हैला गॉट दैट then yeah graph के देखो very important graph is very important over there स्पीड वर्सेस टॉर्क रे गोटे ग्राफ होचे देखो टॉर्क स्पीड ये स्पीड है दिस वन यहाँ भी लिखाई दिस इज स्पीड दिस वन इज स्पीड हैला स्पीड ऊपर टॉर्क रा करना वैल्यू बढ़तेल जिबा देखो लुक्स ओवर हियर दिस वन इज नो लोड स्टार्टिंग रे ग्राफ पर हटा सिखा बोल से तो टॉर्क अच्छे लेफ्ट साइड रे स्पीड अच्छे ये होजे नो लोड जीरो लोड स्टार्टिंग है दुईटा देखो बोल से and looks over here you will found full load at this point full load it's getting a maximum value देखो it getting a maximum value then here is the background point and e line टे ना ड्रॉ हो गला लास्ट के पिला माने देखो स्टार्ट हला बढ़ला लाइन हो गला ये लाइन ही गिरी गला ना नहीं दिस इज द सिंक्रोनस पॉइंट देखो सम सिंक्रोनस हला ये देखो सम सिंक्रोनस fine initially we found the speed and torque is varying वेरी होचे कि नहीं गुट्टे पॉइंट के जगह सेम हो गले सब speed torque became this like this और बैलेंस हो गले that is called synchronous okay next important one हो जे स्टार्टिंग में थोड़ा पेन इंडक्शन मोटर जिन पार्ट माने डिटेल दे मैंने पढ़वार आउ थोड़े गो थ्रू कर दबो वाला और बुझी जेंटा ना आसबा कहबो फर्स्ट गुटे क्वेश्चन तो दिमाग रे आस्तवार कथा why we need a starter for induction motor कार माइंड रे आछे ये कहि पारबो को हमको गोटे मोटर स्टार्ट करबार लगी व्हाई वी नीड अ स्टार्टर ये कहि पारबो को ये पढ़े की को स्टार्टर कहले दरकार हमको एम आई ऑडिबल वॉइस पिला माने सुभा जाउछ कि रे को Yes, sir. स्टार्टिंग टॉर्क कोन पई दरकार
कौन पे दरकार कि रे अरे को आरे माइंड रे आसुनी जेमती स्टार्ट हेतिबो व्हाई यू नीड स्टार्टिंग टॉर्क अरे यस और नो वो ना पहले मु आई विल एक्सप्लेन देखो काना आसी देखो फॉर एन इंडक्शन मोटर गुटे इंडक्शन मोटर केस रे काना आसी स्टार्टिंग रे इट ड्रॉ हेवी करंट इंपोर्टेंट वन इज इट ड्रॉ हेवी करंट until it reaches synchronous speed ns के पहुंचबार तक 0 रू ns के पहुंचबार तक it will draw crazy amount of current बुझी पारलो बहुत हाई टॉर्क थेसी इधर सॉरी बहुत हाई इनिशियल करंट ड्रॉ थेसी इट ड्रॉ करंट हेवीली ओके हेवीली ड्रॉ करबा तरबा बहुत जह केते जह अप्रोक्सीमेट 5 to 7 टाइम्स 5 ରୁ 7 टाइम केते बुझियो पिला माने गुटे 1000 वाट रो जदि तुमे नब इफ यू टुक अ 1000 वाट मोटर 1000 वाट गुटे मोटर नब बोले इट विल अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ 5 एम्पियर करंट 5 एम्पियर करंट ड्रॉ करबा हैला तुम जदि 5 to 7 जदि हाफ एचपी रो नहीं गुटे हाफ एचपी देखि देबा समझते हाफ एचपी अप्रोक्सीमेटली तुमर 4 300 ରୁ 350 ରୁ 400 वाट ड्रॉ करसी 400 वाट 350 ରୁ 400 वाट ड्रॉ करसी यदि 400 वाट ड्रॉ करछे बोले इट विल जनरली टेक 2 एम्पियर 2 एम्पियर नवार कथा हैला 5 to 7 टाइम्स 14 एम्पियर बुझी पारुछ जदि 14 एम्पियर होची व्हाट्स द गैप गैप ही 12 एम्पियर रहे और मोटर चलू जे 2 एम्पियर रे 12 एम्पियर रो गैप है इजंट इज क्रेजी बहुत बड़ गैप टे बना लगा तुमको और इट इज इनिशियली डैमेज ऑल द पार्ट्स कनेक्टेड टू द मोटर हैला तो सेतिर लाइ वी जनरली यूज स्टार्टर ओके स्टार्टर केस देखमा वाला है इफ वी कनेक्ट द स्टार्टर गुटे सेकंड डायग्राम डी भाग करना स्टार्टर रो स्टार्टर DOL starter look over here ये ଗୋଟେ DOL starter है डायग्राम देखा जाउछ कि डायग्राम पढ़ नहीं हो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर देखो बोल से बुझी पाए डुअल स्टार्टर इज वेरी इजी देखो लुक एट द डायग्राम यू विल गेट इज वेरी इजी डायग्राम देखा जाउछ इज इट विजिबल टू एवरीवन इज इट विजिबल टू एवरीवन Yes, sir. ओके लुक्स अबाउट दिस डायग्राम एतरे मैं ड्रॉ करना पारे ना देयर इज आल्सो प्रॉब्लम आई कांट ड्रॉ ओवर हियर फिर भी देखो कैन आई ड्रॉ ओके तो इधर तो भल से देखो A1 B1 C1 जन ऊपर अछि देखा जाउछ ना A1 B1 C1 A1 B1 C1 जन अछि this A1 B1 C1 is input supply हैला ऊपर जन A1 B1 C1 टॉप रे अछि that is input supply C2 A2 B2 जन अछि this is goes through the rotor starter ऊपर लिखा है देखो rotor starter लिखा है कि नहीं
ये सप्लाई है A1 B1 C1 सप्लाई है एन डायग्राम को नहीं ना पर डाउन सो ट्राई करो तो ओपन हो जा notes it's getting same only how देखो इधर अच्छे हैं A1 B1 C1 के नीचे this one how नीचे इधर लाइक फ्लूट से बोलो मैं ड्रा कर दूँ देखो इधर डायग्राम तो अच्छे किरे कौन डायग्राम ଅଛି गुटे ଅଛି खाली गुटे डायग्राम ଅଛି ये तो डबल स्टार्टर डायग्राम है इधर काना थिला देखो ई टाइप रे A1 B1 C1 थिला and we got some जगह ना हमार रोटर स्टार्टर ହେଲା ଟିକେ adjust कर देवा adjust over here इधर काना थिला तीन भल से देखो if you look that diagram तीनटा लाइन थिला हे डायग्राम में ड्रा करबो एग्जाम रे जदी पढ़बा बेला आई विल शेयर द डायग्राम इनसाइड और ग्रुप रे पठे देमी होला डायग्राम ग्रुप पठे देमी डबल स्टार्टर एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर ड्रा ही कर दमा होला इंपोर्टेंट है व्हाई टू मिस दिस वन डबल से ड्रा कर देला बेटर है लुक्स ओवर योर देखो ये तुम्हार ये तुम्हारा मोटर है दिस इज द मोटर यू आर गेटिंग ये मोटर तीनटा फेज है थ्री फेज मोटर है जेहेतु तीनटा फेज है ହେଲା तीनटा फेज रो दिस इज द पॉइंट वी आर गेटिंग आर वाई बी तीनटा इन फेज थिबा आर रेड लेट्स सी ए इज द रेड वन एतरे काना हवा देखो सप्लाई ए रु सप्लाई असला A1 टाइप रे जीवा ही कनेक्ट लाइक दिस ये वाला तुम्हार आर ये वाई नेक्स्ट बी B1 similar asla B1 it will connect like this with our B hela C1 ये तुम्हारा C है ओके R1 B1 C1 connect hela next what will happen this is also connect again to like this ये type of connect थिवा directly next yellow रे गुटे connection थिवा अलगा कलर connection दे दो better हवा solution color option अरे कलर कहने आसवर ओ ग्रीन दे दमा ये गुटे connect point थिवा देखो this point will connect this point will connect to this part and this point will connect to this part तो इतरे काना हवा देखो जनरल पर्पस जनरली बुझी पारबो इजीली तुम जैसे किसी ये ना नो ये गुटे पॉइंट थिवा जते कनेक्ट हवा ये गुटे पॉइंट थिवा जते कनेक्ट हवा हला तो इतरे दुटा स्विच टाइप थिवा इदु इट्स ए स्टार डेल्टा स्टार्टर काना थिवा गुटे स्टार डेल्टा स्टार्टर ओके स्टार डेल्टा स्टार्टर रो मतलब काना होचे स्टार्टिंग रे इट विल कनेक्ट एज ए स्टार स्टार से भी कनेक्ट हुआ स्टार्टिंग रे स्टार माने लाइक दिस okay this is star and the second phase it will connect like a delta this one is delta okay that's why this is delta ये पार्ट तुम्हारा डेल्टा ये पार्ट तुम्हारा स्टार ये बुझी पारलो स्टार कने डेल्टा कने तो कने हुआ देखो ये स्टार कनेक्ट हुआ स्टार्टिंग रे it will absorb the extra currents okay
extra current in thiva, it will absorb the extra current. Looks over here. Initially the star connected after this 5 to 10 seconds starting रे काना थिवा देखो 5-10 सेकंड तक ये स्टार कनेक्टेड थिवा 5-10 सेकंड तक काना थिवा स्टार कनेक्टेड थिवा तापरे से डेल्टा हे जिवा हैला एंड स्टार कनेक्शन रे काना हवा starting current is 1/3 that of 1/3 that of initial माने incoming current हैला starting current काना हवा 1/3 हे जिवा what 1/3 हे जिवा starting current is 1/3 of DOL बुझिपाल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट रे जेंटा हवा तार तू 3 भाग रो भागे थिबा के स्टार्टिंग करंट केंति रे स्टार डेल्टा रे स्टार जेतले थिबा स्टार थिला टाइम रे लुक्स ओवर द हियर जेतले ये थिबा दिस इज कॉल्ड स्टार ये स्टार है तुम अरे ओके ये हो जे स्टार ओके ये टाइम रे काना थिबा स्टार्टिंग करंट विल बी 1/3 1/3 टाइम्स थिबा 3 भाग रो भागे थिबा कम करंट थिबा कि नहीं नेक्स्ट काना हवा जिते बेले मोर स्पीड ता नॉर्मल हे जिबा ऑन द स्पीड बिकम्स नॉर्मल और nr very close to ns synchronous speed ର ପାକେ ପଲେ ଆସିବା nr ସେତେଲେ କାଣା ହବା ଇତେ କି ଆମେ କ୍ଲୋଜ कर दमा इते हम काना कर दमा क्लोज कर दमा and we will turn on this side of supply बुझि पारलो इते दुईटा पार्ट थिबा गुटे थिबा स्टार this one is star this whole part is star this whole part is delta हला स्टार्टिंग रे 5-6 सेकंड ले खाली ये ऑन हबा तापरे ये ऑन हबा ये गोटे मेथड है जेंटा कि स्टार्टिंग रे करंट कंट्रोल करमा हमर इंपोर्टेंट पार्ट कना थिसी एनसीबी स्टार्टर रे हमें स्टार्टिंग करंट कंट्रोल करमा काना करमा स्टार्टिंग we will control the or limit कोई पारबो limit is a very good word limit the starting current limit the starting current और इधर writing finance word oh let it be will limit the starting current okay से जिनिस करा है स्टार डेल्टा इधर देखो लिखा है स्टार डेल्टा इंडक्शन मोटर हला इधर एक्चुअली जनरल एग्जाम रे पड़ला ये ड्रा ना करबो रादर यू विल प्रिफर ड्राइंग दिस वन ओके ये सर्किट ड्रा करो looks over here ये सर्किट ड्रा करो दिस इज द स्टार डेल्टा स्टार्टिंग a1 b1 c1 हो इनपुट b2 c2 a2 हो जे तकर स्टार कनेक्शन देन रोटर तपर a1 c1 c2 b1 b2 an a2 हो जे तुम डेल कनेक्शन ओके देन डायरेक्ट होचे एंड डुअल स्टार्टर रे काना আছে डायरेक्ट सब लागि दिस डुअल स्टार्टर तुम देखो वाला इफ यू गो फॉर ए डुअल स्टार्टर ना नहीं रे डुअल स्टार्टर इफ यू डुअल स्टार्टर देखो वाला लुक ओवर योर डुअल स्टार्टर गोटे स्विच टाइप रो है इट्स जस्ट ए स्विच क्लिक दिस इज द डायग्राम ऑफ डुअल स्टार्टर ये तो मैं ऑलरेडी कैन तुम ईडी दिता वाला ड्रा करतो दिस पार्ट डुअल स्टार्टर काना थिबा गोटे फ्यूज अछि कंडक्टर अछि ओवरलोड प्रोडक्शन अछि स्टार्टर सीधा सीधा लाइए देखो इधर यान फ्यूज अछि फ्यूज कंडक्टर ओवरलोड प्रोडक्शन अछि ते गोटे स्विच माने आउ किछि न से हैला दिस आर द स्विच इधर भी स्टेप बाय स्टेप देखि देमा काना कहू छी looks over here for the dual starter motor directly connected to the supply of high conductor and overload relay जेंटा मी कहउतली तुमको देखा बोल से motor is directly contact to the supply via conductor on overload relay पहले ये तुमर जदी supply है ये तुमर motor है इन मझरे काना थिबा मझरे फ्यूज थिबा फ्यूज परे केनसी कंडक्टर गुटे थिबा कंडक्टर बोले भी स्विच टे भाबी पारो तुमे कंडक्टर में इट्स ए जस्ट स्विच कंडक्टर माने स्विच टे आ किछि नय से कंटाक्ट स्विच फ्यूज थिबा फ्यूज पर स्विच पर मोटर कनेक्ट थिबा माने गुटे लाइन टे मझिरे तुमर जनता फैन जनरल सप्लाई रो फैन के कोला वाला मझिरे स्विच लागि दिस कि नहीं सिमिलरली you will find fuse over here or safety protection device this is called by परमाई दिखा में safety protection device
डायरेक्टली ओके ହେଲା it start देखो इधर वॉल से सब लिखा है देखो इजीली a starting current is 5 to 7 in starting torque is 1.5 and 2.5 ton used for motor up to 5.5 to 5 to 7.5 किलोवाट जे छोट मोटर यूज करथन कागे ड्यूअल स्टार्टर के इनना तुम्हार घर मान के मोटर लागी देसी हैला सेदिरे घर मान के लागी देसी और तुम्हार बेसिक पंप मान के लागी थिबा से जगह रे हम यूज करसु यूज जनरली ड्यूअल स्टार्टर छोट मोटर रे इंडस्ट्री लेवल रे ना यूज करू जनरल होम अप्लायंसेस लेवल रे स्कूल लेवल रे भी तुम कहि पारबो ए जगह रे लागसे ड्यूअल स्टार्टर তোমার স্কুল রে भी जेंटा लागी देखबो दैट इज आल्सो ए डुअल स्टार्टर लाइक तुम्हार बिल्डिंग रो साइड लागी ना गोटे मोटर वाटर पंपिंग लाइन दैट इज आल्सो ए डुअल स्टार्टर नेक्स्ट ओवर हियर अ स्टार डेल्टा स्टार्टर इधरे काना हुआ देखो इतरे छटा टर्मिनल था बस देखो सेतरे डुअल रे काना थिला ड्यूअल रे ये तीनटा देखो ये तीनटा इन थिला ये तीनटा वायर से तीनटा इन थिला ये तीनटा ही जाय डायरेक्ट मोटर के एटा मझरे गोटे फ्यूज लागी छे ये गोटे कॉन्टैक्टर एलिमेंट लागी छे ये हो फ्यूज ये हो कॉन्टैक्टर एलिमेंट ये हो तुम्हार मोटर सरला किछि नानो ये देखला वाला बहुत बड़ डायग्राम लागु छे इतरे किछि जनरल केस रे नाय नो ओके लेट नेक्स्ट जंप टू दिस पार्ट इतरे काना थिबा देखो इट हैज 6 कॉन्टैक्टर छोटा कॉन्टैक्टर थिबे इतरे तीनटा स्टार लगी 1 2 3 जेतरा ए बी सी लिखि दिला तले एन थिला तीनटा ये तीनटा स्टार लगी थिबा तीनटा फॉर डेल्टा ओके तो स्टार्टिंग रे से काना हबा स्टार हबा star haba. After 5 to 7 seconds, it becomes delta while at running. ये हला starting, ये हला running. Okay, this is the difference between a star and delta. Got that? बुझी पारलो? बुझी पारलो कि नहीं? बुझी पारलो कि नहीं? This is the relation between the star phase and line in a three phase. Voltage V phase equals to V line, V phase equals to VL by root 3. And here the current I phase equals to I by root 3. Sorry, this IL by 3. That's why the current becomes 3 times less, 1 by 3 times current. When current come is general case re. Hela. Ken jaga use देखो it is usually mostly used for industrial purpose ला use होगा ये. You look for the use case industrial purpose ला use होगा and fan लाई pump लाई use होगा है and this is also very costly. This one is also costly and look at this diagram over there इतने बॉल से दिखाइए देखो डायग्राम में although इतने तुम्हें बॉल से बुझी ना पा रहा तो प्रीवियस डायग्राम देखो you will understand very easily ये देखिए तुम्हार तीनटा लाइन थिला मधुरे तुम्हार कनेक्शन थिला मोटर रो स्टार्टिंग रे ई जगह रे कनेक्टेड हिक थिला जेना कि स्टार करतुला नेक्स्ट ई पॉइंट करन होतुला दिस वन इज डेल्टा फॉर्म करतुला ये हला तुम्हार स्टार ये हला तुम्हार डेल्टा दैट्स इट ये था तुम्हार डिफरेंट स्टार्टर तापर सॉफ्ट स्टार्टर देई ई सॉफ्ट स्टार्टर करेंटली एबे नुआ एआई बेस स्टार्टर एटा यूज थायरिस्टर हला थायरिस्टर बोले काना है चिप यूज करवा चिप रे तुम मेमोरी मेमोरी कार्ड नो से हला प्रोग्रामिंग जे भी यूज करेगी क्विक करवा स्टार्टिंग करेंट लिमिट टू 2.2 to 4 इन स्मूथ टॉर्क नो जर्क देखो ये बहुत स्मॉल मोटर ली यूज करा है सी हला बहुत सी ये तुम 2 मार्क क्वेश्चन आसबा दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन एग्जाम रे सॉफ्ट स्टार्टर विल बी योर 2 मार्क क्वेश्चन okay soft starter will be your 2 mark question next important one होउजे a speed किछि डाउट अछि कि कुह किछि डाउट अछि बोला कुह related this topic इन टॉपिक रे डाउट अछि बोला कुह टिके जदि किछि डाउट अछि कार माने कुह तापर हम मूव ऑन करना लास्ट पार्ट मोर चैप्टर स्पीड कंट्रोल डाउट है ना
डाउट ना वाला आगे बढ़मा स्पीड कंट्रोल बढ़मा looks over here. We'll jump to the last part of this chapter. That is your speed control of AC induction motor. That is voltage frequency. V by F होउची वाला voltage we use voltage slash frequency to control the speed. The motor speed control करवार लगी we use voltage and frequency. What do we do with the voltage and frequency? What do we do with the voltage and frequency? देखो इतने इंपोर्टेंट पार्ट कौन है देखो गोटे इंडक्शन मोटर है जनरल वर्ड बुझ गोटे इंडक्शन मोटर है माने इंड्यूस होची वी आर गेटिंग इंड्यूस्ड अ इलेक्ट्रिक फील्ड और माने मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होची ईएमएफ जनरेट होची बेले काना पाए आसुची गोटे इंडक्शन मोटर इंपोर्टेंट सबुतिर होची पाए पाए काना है फ्लक्स जितनी फ्लक्स बढ़वा एतकी फास्ट तुम मोटर बुलवा एतके माइंड रे रखी तो जितकी फ्लक्स का नाम बढ़वा एतकी तुम मोटर फास्ट बुलवा हैला एंड वी गॉट ये जदी तुम प्रीवियस मोटर इक्वेशन बहुत से देखी दिबो वी गॉट द इक्वेशन लाइक v is very much very close to proportional to 4.44 ये मा गुटे आगरु पढ़ी सारला इधर ऊपर ओके f into t इधर ऊपर पढ़ी देला हमें ହେଲା ତ ଜେନେରାଲ କେସରେ କାଣା ହେସି ଏ ଯଦି ନା ବି କିଏ ଇଏ ପଢେଇ କହୁଛ ତାର ଜେନେରାଲ ଫର୍ମୁଲା ଦେଖ ବୋଲେ ଇଫ ୟୁ ଲୁକ୍ ଫର ଦ ଜେନେରାଲ ଫର୍ମୁଲା ପାଏଟା ତୁମର ଇନ ଫ୍ଲକ୍ସ ଅଛି ଫ୍ଲକ୍ସ ଜେନେରାଲି ଭୋल्टेज ବଢଲେ ବଢସି एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ले कमसी फायर वैल्यू तो फाइव देन जनरली प्रोपोर्शनल टू v by f that's how we can control the fire यदि फायर कंट्रोल करमा बेला हमर स्पीड भी कंट्रोल हे जिवा तो लुक्स ओवर योर स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर दैट इज nr हो जे रोटर स्पीड इज इक्वल्स टू ns into 1 minus s ये जस्ट फॉर्मुलेट करि जे सागर फार्मूला रु और फार्मूला काना थिला स्लीप इक्वल्स टू ns minus nr by ns ई फार्मूला तुम देखबा बेला तुम एटा पाई जिवो ओके that is also आके formulate कोची and the speed can be varied by changing the frequency poles and slip first ये formula frequency and n के represent करू जे here the speed can be varied by we can change the frequency pole and slip हैला so speed से हिसाब से vary करी परमा next voltage variable दे देखो principle air gap flux pi is proportional to v by f to keep the flux constant ever saturation and maintaining torque तो v and f are varied proportionally okay below base speed the v by f equals to constant the constant torque reason v by f यदि constant रहबे बेले v by f यदि तुमर constant रहबे बेले torque also constant रहबा at a base speed the voltage limits to rated if the f increases in the field weakening and constant power regain એટલે કાણે કહું છું કે v by f તમટા v by a કાણે લાઈન કાણે कहला देखो यदि v by f કાણા हे बोला रे v by f यदि तुमर constant ଅଛି then you will get a constant output वे v by f भेरी कर देबा तोला देखो बोल से देखो if ac by rectifier बोल से पाई दे जे रे ओ इधर स्पीड कंट्रोल दे ही नहीं रे हाउ we will discuss this one यदि ना दे वाला में देखि देबा देखो देखो
Why this V by F is very important? वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी क्या है इंपॉर्टेंट है? V by F क्या लेते कि इटा ही नेशन रोटेट स्पीड करवा लगी. देखो, टू अवॉइड सैचुरेशन, इट्स टू अवॉइड saturation. Saturation means completeness. If it is completeness, it can't rotate. ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ complete ହେଇଯିବା, ଯେମିତି ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ns equals to n ହେଇଗଲା ବେଲେ it can't rotate. So to avoid the saturation, flux must be kept constant. Pi ର value to avoid saturation के avoid करवार लगी हमको v by f सबूली constant रखवा के पड़वा. That is phi. Phi should be constant. ହେଲା, ଯଦି v बढ़ुचे बेले आमे f के भी तार संगे बढ़ामा. बुझी परलो, यदि v कमुचे वोल्टेज कमुचे माने फ्रीक्वेंसी के भी तार संगे हमें कमाम. Else we can't get a fixed phi value. Fixed phi value कहले दरकार हमको to avoid saturation. Saturation माने completeness, खत्म तार माने बंद हवाटा. ହେଲା, तो सेटा अवॉइड करवार लगे हमको गोटे v by f रो रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रखवार के पड़वा. दिस v by f always seems to be constant for an induction motor. That is the important part over here. Okay, तो इतरे यदि एग्जाम रे तुमर पड़वा, एग्जाम रे काना लिखबो तुमे, एग्जाम रे काना लिखबो ये तुम लिखबो अछि वेरी अप टू यू. नेक्स्ट इंपोर्टेंट काना लिखबो देखो, we generally knows that phi is proportional to v by f. ये वाला फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट लिखबो, to avoid saturation, v by f must be constant or the phi value must be constant. ହେଲା, तो phi रो वैल्यू कांस्टेंट जदी रहबा तापरे तुमर काना v by f कांस्टेंट रहबा. गॉट दैट? बुझी परलो? हौ, तापरे डायग्राम टिके देखि दमा. देखो इतरे काना देजी. देखो v by f कंट्रोल केंदे करसन. देखो इडे तुमर डिजिटलाइज मेथड है. डिजिटलाइज मेथड जितरे जो छे गोटे एसी मेन सप्लाई अछि. लुक्स ओवर हियर, दिस इज द एसी मेन सप्लाई. AC main supply है, AC रो DC है कि this is the control panel. Here we control the V by F. Okay, PWM का है pulse wave modulation. ये तो मैं ना पढ़ी है ना, फ्यूचर रे पढ़बो. pulse wave modulation. अरे pulse wave modulation फ्यूचर रे पढ़बो. तार PWM ऊपर तुम क्वेश्चन भी थिवा फ्यूचर फिफ्थ सेम में भी तुम आसी पारे तार ऊपर. ओके, दिस द बॉल्स डायग्राम. तो बुझी पारो तुम जानबार कथा इतरे AC इनपुट अछि, इट कन्वर्टिंग इनटू DC. दिस पैनल विल हेल्प्स टू मेंटेन V by F. ये पैनल टे लगा है, पैनल थ्रू रू हमें V by F कंट्रोल करसु. ओके, we should have a diagram like this. इधर स्टेप बाय स्टेप देखो. फर्स्ट AC सप्लाई इन तुम अच्छे. AC supply is AC main is there. It goes to rectifier. Rectifier काना करवा AC to DC कर दवा. DC link to capacitor bank, pulse wave generator. Then it's varies P by F to the motor. है तो ये जिन पांच सा स्टेप होचे इधर काना काना ऐसे में तुमको जनरल वर्ड रे कहि दउ जे एग्जाम रे पढ़ला. अप टू यू लिखबो ना लिखबो तुमर ऊपर होचे. AC main देखो, मेन सप्लाई जगह आसला फर्स्ट केस रे. मेन सप्लाई आसला, मेन सप्लाई दैट इज योर 400 वोल्ट और समथिंग आसला. 400 वोल्ट तक सप्लाई आसला ई जगह रे. देन डीसी ही जबा ई जगह रे. सेकंड पार्ट डीसी ही जबा. थर्ड पार्ट काना ही जबा डीसी लिंक विद द कैपेसिटर. कैपेसिटर संगे डीसी लिंक ही जबा. लास्ट पार्ट रे काना ही जबा इट्स बिकम अ पीडब्ल्यूएम सिग्नल. दिस इज द पल्स वेव मॉड्यूलेशन सिग्नल लाइक दिस एंड द टाइप ऑफ वेव पड़थिबा. हला पीडब्ल्यूएम सिग्नल क्वेश्चन देखिए इतरे हमें स्पीड वेरी सब करि पारसन इजीली. हला वंस वी कन्वर्ट दिस सिग्नल टू पीडब्ल्यूएम we can easily convert माने एडजस्ट करि पारबा. हमें जहां भी करि पारबा v by f ऊपर. ओके, देन काना करबा हमें v के वेरिएबल करि पारबा. वी गॉट द
V and F variable supplied to the motor, then we control the V by F ratio. Okay, তোমার পাখে voltage তুমি তোমার হিসাবে দেই পারবো, frequency নিজের হিসাবে দেই পারবো বলে you are controlling both, then you can give the constant supply to the motor. বুঝি পারলো? বুঝি পারলো? ये जहाँ भी machine লাগিছে আর RGB টায়ার লাগিছে, PWM ইনভার্টার লাগিয়ে, these things are there to control V and F. ओके, ये पूरा पार्ट अच्छे जहाँ ये पूरा कंट्रोल करवा ले अच्छे काना V by F के कंट्रोल करवा ले अच्छे, this whole part is there to control V by F. तो ये थिला तुमर काना थिला तुमर, this one is your 3-phase induction motor. Okay, इतने important parts वाले कोई दूसरे देखो, construction is a very important question. Construction of DC machine, AC machine must be there, और transformer यदि next class में पढ़वा गुटे class पे that is also must be there. Okay, तो most important हो जाए construction starting part. Okay, construction of DC machine यदि exam रे तुम्हारे ये diagram draw करना बार DC 3-phase induction motor को diagram देखना वहाँ 3-phase induction motor 3-phase induction motor. If you look at the diagram, you will draw, there is no such diagram like induction motor diagram. Oh, exam रे पढ़ला you will draw this kind of diagram. Okay, this kind of diagram, final diagram रे ये देखो जरा थेज भी बहुत से एक्सप्लेन करिए, देखो बहुत से एक बार बताओ पढ़े बोला कि रे. Okay, look over here. Here you get the clear picture of this diagram, 3-phase, and this is the diagram you should draw. Okay, I will share this diagram in your groups. जो तुम diagram पढ़े देमी, जो diagram Google में नहीं पारो जो बहुत बढ़िया. Okay, this is the diagram you should draw in the exam. This is the phase, you can see phase sequence. Exam रे पढ़ला phase sequence भी draw करबो, diagram भी draw करबो. तो इतने तो बढ़िया नोट दीजिए रे. It has given very good clarity of notes. Greek is a very good website for learning electrical machines. ହେଲା तापरे important part हला तुमर, इधर पर important part कौन से देखो. First हला construction working principle is very important. Second part होचे तुमर starter ऊपर question exam रे आसपा ही आसपा ହେଲା DOL starter and Star-Delta starter. Must you will find a must question over there. Okay, you will find a must question over there. जहाँ भी एक्सप्लेन कर दिल थोड़ा देखिए तो वो कोड थ्रू कर दबो इधर ऊपर. I will share this PDF in your group also. तापर important question होला तीनटा एक important question होचे V by control होचे last question होला. मैं जे क्वेश्चन भी तुम दे दिली. Describe construction working principle of AC motor with neat diagram. इतरे diagram नैनो diagram तुम्हें draw करबो. ये diagram draw ने करबो, rest diagram draw करबो होला. तापरे क्वेश्चन कौन था, describe the method of starting of AC motor. A DOL starter छे, don't draw this diagram. I will share the diagram with you after the class. सेटा भी draw करबो होला. important है ये क्वेश्चन भी important है, very important. Start data starter रे भी ये diagram draw ना करबो. I will share the diagram with you. This is a like ये तो मोर general case रो diagram है, explanatory diagram no is एटा होला. तो इधर contact देखो बोले, if you look at the diagram you will clearly see the contact, 1 contact, 2 contact, 3 contact, 4 contact, 5 contact, 6 contact. 6 contact कोई तो लगे नहीं, 6टा contact हो जाए, 3टा for star, 3टा for delta. Okay, ऊपर लिखा ही देखो star, this one you will get delta, star delta बॉल से लिखा ही diagram देखो बोले. Okay, तो exam रे ये draw नहीं करबो. I will share the diagram with you. And third question is the important V by F control. इतने भी PWM दीजिए, मोटर डायग्राम एग्जाम रे पढ़ला खाली M लिखी गए अंदर ग्राउंड कर दबो, बाकी सेम डायग्राम करबो हैला. सेम पार्ट दीजिए देखो AC टू DC है, ये यार DC है बा, DC हैला पर this fellow will control V and F. This fellow will control V and F. Important. हो इतर ऊपर तीनटा क्वेश्चन जहाँ भी तुमको दीजिए विद आंसर दीजिए जैन ये पढ़बो भल से डे समझते. एवरीवन लिसन, एवरीवन you should go through these 3 questions. It's very important. These 3 questions are very important. Okay,
तीनटा क्वेश्चन ही तुम चैप्टर अच्छे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर अच्छे वी विल एनालाइज ट्रांसफॉर्मर इन एनी अनदर क्लास ओके गॉट इट एवरीवन अरे सुनुज कि नहीं रे कि सब सुई पड़ल न कि गोटे लाइक दउछि कि रे हु इज दैट पर्सन गौरव है okay got this one so that was for today's class oh class to recorded hoche I will upload this class on YouTube also so जिन माने class late join कर जब बुझी ना पारलो फिर थोड़ा जाके देखि देबो ठीक होचे हो चलो धन्यवाद सर हो भल से पढ़बो पिला माने तीनटा क्वेश्चन लास्ट रे जहां दिया है तीनटा क्वेश्चन समस्ते पढ़बो है तीनटा क्वेश्चन में जो गारंटी तुम एग्जाम रे एक दुटा क्वेश्चन देखि देबो थिबा हो जाई बार पिला माने आ गुटे क्लास करमा केबे दिन ट्रांसफार्मर काली और पर दिन करिमा क्लास कहमी आई विल शेयर द डिटेल इन ग्रुप्स ओके से ट्रांसफार्मर रे तुम मोस्टली दुटा ही क्वेश्चन अछि तो भल से पढ़ी दिबो पढ़बो बेले बहुत इजी है तुमको पढ़ावार लगी मते आउ नहीं पढ़ी आसबो बेले बचन शुणी की जीवा कौन दैट्स इट चलो